Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English. Chapter 10. Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक एंड टर्न टू page number 180. Okay, so in the previous lecture we were done with page number 179. We were done with page number 179 of chapter number 10. We have to move to page number 180. So let us continue the chapter. Okay, now what does Ravi says? Ma'am, there are many children and among us who chew tobacco and okay, so it's and that is in black words and gutka full stop. So Ravi is saying that ma'am, among us also there are many children who chew gutka and tobacco. So Ravi कहता है मैम, अध्यापिका जी, देर वहां आर है मैनी बहुत चिल्ड्रन बच्चे अमंग अस हमारे बीच हु जो कि च्यू चबाते हैं टोबैको तंबाकू एंड और गुटखा. सो रवि कहता है कि मैम, हमारे बीच भी ऐसे कई बच्चे हैं जो तंबाकू और गुटखा चबाते हैं. Our parents also do that. Now Ravi adds another statement that our parents also do that. Our हमारे parents माता पिता also भी do करते हैं that वो. So यहाँ रवि कहता है कि हमारे माता पिता भी गुटखा और तंबाकू चबाते हैं. Now what does teacher says? Okay, that's alarming, my dear children. So teacher is exclaiming that it is very much dangerous, it's very much alarming. That's वो है alarming, खतरनाक, my dear मेरे प्रिय children बच्चों. So teacher कहती है कि बच्चों, ये काफी खतरनाक है. तंबाकू चबाना और गुटखा चबाना काफी खतरनाक है. अलार्मिंग का मतलब स्टूडेंट है यहाँ खतरनाक. Look at the pouch of any gutka. Okay, so teacher says that look at the pouch of any gutka. टीचर कहती है बच्चों से कि look देखो at the pouch थैली of any गुटका गुटके की किसी भी थैली पर देखो. टीचर स्टूडेंट से कहती हैं कि आप गुटके की किसी भी थैली पर देखो. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यू विल फाइंड अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट. सो टीचर सेज दैट लुक एट द पाउच ऑफ एनी गुटका, यू विल फाइंड अ वार्निंग ऑन इट. यू विल तुम्हें मिलेगी, फाइंड अ वार्निंग चेतावनी, प्रिंटेड छपी हुई, ऑन इट उस पर. सो टीचर कहती है कि मैम कि स्टूडेंट्स आप किसी भी गुटखा के पाउच पर देखिए, आपको एक चेतावनी उस पर छपी हुई मिलेगी. Now what does Shivam says? That is, yes ma'am, I have also seen a warning on my father's cigarette pack. So here Shivam, who is a student of that class, says that ma'am, yes ma'am, he has also seen a warning on his father's cigarette packet. Yes ma'am, जी अध्यापिका जी, I have, मैंने भी also seen देखी है, a warning एक चेतावनी, on my father's
मेरे पिताजी के सिगरेट का जो पैकेट है उस पर मैंने एक चेतावनी देखी है। शिवम कहता है कि मैम मैंने भी एक चेतावनी ऐसी देखी है जो कि मेरे पिताजी के सिगरेट के पैकेट के ऊपर प्रिंटेड है। नाउ व्हाट डज टीचर सेज? यस, हाँ। However, in spite of warning, people use these harmful things, THINGS things. So teacher says, हाँ. In spite of warning, people use these harmful things. However, फिर भी, in spite बावजूद of warning चेतावनी के, people लोग use इस्तेमाल करते हैं these ये harmful खतरनाक things चीजें। So टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि ऐसी चेतावनियों के बावजूद भी लोग इतने खतरनाक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ऐसी खतरनाक चीजें इस्तेमाल करते हैं। This way, they are also following the path of Rinku's father. So, in the last, teacher says that this way, they are also going on the same path as Rinku's father. This way, इस तरीके से they, वे, are, हैं, also भी, following, चल रहे पीछे, the path, रास्ता, of Rinku's father. So यहाँ पर following the path का मतलब है उसी राह पर चल रहे हैं जो कि जिस राह पर रिंकू के फादर चल रहे थे। लास्ट में टीचर का कहना है कि इस तरह से तो ये सारे लोग जो भी गुटखा चबा रहे हैं, तंबाकू चबा रहे हैं और सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर रिंकू के फादर चले थे। So here the teacher says that they all who are chewing tobacco and gutka and used to smoke are on the same path as Rinku's father. So students, let us move to the homework part. Okay, so you have some hard words from today's lecture. Class 5, subject English, chapter 10, lecture number 3. So students, these are some hard words from today's lecture. First one is alarming, ALARMING. Alarming का मतलब होता है खतरनाक. Next is printed, PRINTED. Printed का मतलब होता है students छपा हुआ. Third one is warning, WARNING. Warning का मतलब होता है students चेतावनी. Fourth one is path, PATH. Path का मतलब होता है students रास्ता या राह. Okay students, you have to learn and write these hard words in your notebook in neat and clean handwriting. Note, send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. Note, डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर भेज देना है। Okay students, I hope you like the video. Thank you for watching.